Om Vishnupad Paramahamsa Paravajakacharya Astatara Satashi Srimad His Divine Grace Srila A.C. Bhakti Vedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada Ki Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paravajakacharya Astatara Satashi Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paravajakacharya Astatara Satashi Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Charu Swami Guru Maharaja Ki Anantikoti Vaishnav Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sagaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinatha Shamakunda Radhakunda Giri Govardhana Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mathura Dham Ki Shri Dwarka Dham Ki Shri Mayapur Dham Ki Shri Navadvip Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Tulsi Devi Ki, Bhakta Devi Ki, Samaveda Bhakta Vrinda Ki, His Divine Grace, Srila Prabhupada Ki, Jagadguru, Srila Prabhupada Ki, the Ocean of Mercy, Srila Prabhupada Ki, Nitai Gaur Premanande. Oh, glories to the assembled devotees. Oh, glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the lotus feet of Shishi Guru and Gauranga. Hari Hari Moro. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devam Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirajat Nasta praise about the Seva Bhagavati Utamashloke Bhakti Avadishtaki. So today's Bhagavatam class will be offered in honor of Jagannath, the father of Sri Chaitanya Mahaprabhu Ki. Jagannath Mishra Prabhu Ki. Jagannath Mishra Prabhu Ki. Jagannath Mishra Prabhu Ki. आज जगन्नाथ मिश्र जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता हैं, उनके सम्मान में उनको अर्पित की जा रही है. So, this festival of Jagannath Mishra यह जगन्नाथ मिश्र उत्सव is always in connection, as everything in Krishna, with Krishna. तो जैसा कि भावना कुछ ऐसे है, उत्सव कृष्ण से जुड़ा है. Actually, the eternal father of Sri Chaitanya Mahaprabhu. श्री जगन्नाथ मिश्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शाश्वत पिता हैं. And just as Vasudev and Devaki appeared to be the parents
parents of Krishna, but rather Krishna is independent. He doesn't need parents. जैसा कि वसुदेव और देवकी भगवान श्री कृष्ण के माता पिता प्रतीत होते थे, लेकिन भगवान कृष्ण पूर्णतः स्वतंत्र हैं, उनको माता पिता की आवश्यकता नहीं। Krishna says, Aham bija pradapita. I am the seed-giving father of all living beings. भगवान कहते हैं कि वो सारे जीवों के बीच प्रदाता पिता हैं। So how can the seed-giving father, the cause of all causes, have a father and a mother? तो भला उस बीज प्रदाता पिता जो सभी कारणों के कारण हैं, उनके कैसे माता पिता हो सकते हैं? Who wants to venture a guess of why Krishna has a father and a mother? तो कोई अनुमान लगाना चाहेगा कि भगवान कृष्ण माता पिता क्यों स्वीकार करते हैं? What will the Brahmins say? Huh? I said, what will the Brahmins say? तो ब्राह्मण क्या Anyone? कहते हैं? Krishna has a father and mother because Krishna enjoys having a father and mother. तो कृष्ण भगवान माता पिता इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि वह माता पिता के जो प्रेम है उसका आनंद उठाना चाहते हैं। Aham nisarva jagyanam bhuktacha prabhu ekcha. I am the only enjoyer and the only object of sacrifice. Those who do not recognize my true transcendental nature fall down. तो भगवान बताते हैं कि मैं ही सारे यज्ञों का परम भोक्ता हूँ और जो मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते उनका पतन हो जाता है। So Krishna is always enjoying whatever the rasa is. भगवान कृष्ण सारे रसों का हमेशा आस्वादन करते रहते हैं। There's a famous picture of Krishna carrying Maharaj Nanda's shoes on his head. एक बहुत ही जाना माना चित्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज की जो पादुका उसको अपने सिर पर रखे हैं। Where have those shoes been? वो जूते कहाँ के हैं? All over the earth, right? जिसको नंद महाराज जिस जूतों को हमेशा जमीन पर पहन के चलते हैं। But Krishna is enjoying great pleasure serving his father by carrying his shoes on his head. लेकिन भगवान कृष्ण दिव्य रस का आस्वादन कर रहे हैं अपने पिता की पादुका को अपने सिर पर रखकर। So Jagannath Mishra, he is eternally the parent of Sri Chaitanya Mahaprabhu. श्री जगन्नाथ मिश्र शाश्वत श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता हैं। We don't have a first canto Bhagavatam here, do we? Is there? First canto Bhagavatam? No? We usually get a whole library of books in most temples. What is that, the first canto? That's all right. I just want to show the cover of the book on the first canto of Srimad Bhagavatam will show you all the Vaikuntha, right? Then it will show the Mahatattva, which is a very small section, and then it will show Goloka Vrindavan. तो यहाँ पे हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का जो कवर पेज है वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे उसमें पूरा ब्रह्मांड है, महत्वत्व है, वैकुंठ है और उसके ऊपर है गोलोक वृंदावन। Anyway, they're just getting me to do some exercises here. Turn my head. Anyway, so in Goloka Vrindavan, which is shaped like a lotus flower. तो गोलोक वृंदावन जिसका आकार एक कमल पुष्प के भांति है। On half of the Goloka Vrindavan is Radha Krishna's pastimes and all the inhabitants of Vrindavan. तो वहाँ पे आधे गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो चलती रहती हैं। It's a very old one. Get this one in the corner, the left-hand corner down here. See? Not, do you see? No? Oh, close. Right there. Yeah, there. Over there. This one. The blue. The blue one.
Anyways, there it is. Okay. I'll blow that one up. Can you make it bigger? Okay. Very good. So you see, Radha and Krishna, and to the left there, or if we're facing it, it's to our right, is all the pastimes of Sri Vrindavan Dham. And on the other side of the planet is all the pastimes of Sri Nitai Gauranga. So on half of Goloka Vrindavan is Sri Dham Mayapur Navadvip Dham. And there Jagannath Mishra is eternally the father of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो आप देख सकते हैं गोलोक वृंदावन है, उसमें एक तरफ आधा पूरा राधा और कृष्ण की लीलाएं चलती ही रहती हैं, और दूसरी तरफ जो आधा हिस्सा है वो नवदीप मायापुर है, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की निताई गौर की लीला चलती हैं, और वहाँ श्री जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु के शाश्वत पिता का किरदार निभाते हैं. On this planet, Srila Prabhupada explains, there's two modes of transportation. श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस जगत में दो तरह के यातायात की सुविधा है. One mode of transportation is walking. पहला तो है पैदल चलना. They don't have buses there. They don't have trains. They don't have motorized rickshaws. तो वहाँ पे ना बस है, ना ट्रेन है, ना ही कोई ऑटो रिक्शा वगैरह है. Because the other mode of transportation is just by willing. Like, I want to be in the Prasadam hall and go, or I want to be at Govinda's restaurant. You're there. और जो दूसरा वहाँ पे यातायात की सुविधा है वह सिर्फ इच्छा के माध्यम से. मान लो हम कृष्ण बलराम हॉल या फिर गोविंदास किचन में जाना चाहते हैं तो हम तुरंत वहाँ पे इच्छा करके जा सकते हैं. By walking and by willing. या तो पैदल चल के या तो इच्छा से. There's no carbon emissions. वहाँ पे कोई कार्बनीकृत मशीन नहीं है. No air pollution. कोई वायु प्रदूषण भी नहीं है. So, I'm going to read this one verse which talks about Jagannath Mishra. हम जगन्नाथ मिश्र के बारे में एक श्लोक पढ़ेंगे. Madhava Ishwara Puri Sachi Jagannatha Advaitacharya Prakata Hoila Se Sata. Madhavinda Puri, Ishwara Puri, Srimate Sachi Mata, and Srila Jagannath Mishra all appeared with Sri Advaita Acharya. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Do you want to read that? You want to read translation? तो श्री माधवेंद्रपुरी, श्री ईश्वरपुरी, सची माता, जगन्नाथ मिश्र, ये सब प्रकट हुए. Whenever the Supreme Personality of Godhead descends in His human form, He sends ahead all His devotees, who act as His father, teacher, and associates in many roles. जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने मानव रूप में अवतरित होते हैं तो अपने साथ सारे भक्तों को भेजते हैं जो उनके पिता, गुरु और पार्षद के रूप में किरदार निभाते हैं. Such personalities appear before the descent of the Supreme Personality of Godhead. ऐसे व्यक्तित्व पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतरण के पूर्व ही प्रकट हो जाते हैं. Before the appearance of Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, there appeared His devotees like Sri Madhavinda Puri. तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पहले ही श्री माधवेंद्र पुरी प्रकट हुए. His spiritual master Sri Ishwara Puri, उनके गुरु श्री ईश्वर पुरी, his mother Srimati Sachi Devi, उनकी माता श्रीमती सची देवी, his father Sri Jagannath Mishra, उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र, and Sri Advaita Acharya. और श्री अद्वैत आचार्य. So, one of the things that I wanted to speak about, because I was thinking about how Jagannath Mishra
was such a perfect father. Of course, he's father to the Supreme Personality of Godhead. But just as Lord Chaitanya came to teach us how to be a devotee of Krishna, Krishna's devotees also come and teach us how to be a parent of Krishna, a friend of Krishna, etc. तो श्री जगन्नाथ मिश्र के बारे में हम यह बताना चाहते थे कि कैसे वह एक बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। निश्चित ही वे उत्कृष्ट रहेंगे क्योंकि वो भगवान के पिता हैं। जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर प्रकट हुए यह बताने के लिए एक भक्त कैसे बना जाए, उसी तरह भगवान के भक्त भी जब अवतरित होते हैं तो हमें शिक्षा देते हैं। जैसे श्री जगन्नाथ मिश्र हमें यह शिक्षा देते हैं कि कैसे भगवान का माता पिता बना जाए। So the Vedas and Vedic literatures are not a temporary manifestation of this world. तो जो वेद हैं वह इस भौतिक जगत के अस्थायी अभिव्यक्ति नहीं हैं। They are an eternal principle, just as Goloka Vrindavan. वह एक नित्य शाश्वत सिद्धांत हैं जैसे कि गोलोक वृंदावन। So Vedas Jal Sabayara Ham Eva Vejo, Vedanta Krid Vedavid Eva Chaham. Krishna says, by all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of the Vedanta, I am the knower of the Vedas. भगवान कृष्ण बताते हैं कि सारे वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, बल्कि मैं ही सारे वेदों की का संकलन करने वाला हूँ। So the Vedic literature gives full information of the Mahatattva, the Brahma Jyoti, the Vaikuntha planets, and ultimately Goloka Vrindavan. तो जो वैदिक ग्रंथ हैं वह हमें पूर्ण जानकारी देते हैं महत्त्व की, ब्रह्म ज्योति की, वैकुंठा की और गोलोक वृंदावन की। These are not imaginations. This is reality. And those who were very exalted were able to perform according to the Vedic principles an entire culture. तो यह कोई कल्पना नहीं है, यह वास्तविक सत्य है और जो भी बहुत ही बुद्धिमान है वह इन सबको वास्तविक सत्य के रूप में समझ पाएंगे। Other shastra, to be frank, are called Malecha Shastra. They are not sat, they are asat, they are temporary. तो अन्य शास्त्रों की बात कहें तो तथ्य रूप में वे सब म्लेच्छा शास्त्र हैं, वे सत नहीं असत हैं। So Krishna says yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata. Whenever there's a rise in irreligion and a fall in religious practice, I dissent. भगवान कृष्ण बताते हैं जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अवतरित होता हूँ। To elevate the consciousness of the human beings in this world. इस जगत में जो मानव हैं उनकी चेतना उठाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। According to their ability to understand reality, truth, and their connection with the Supreme Personality of Godhead. तो उस समय के लोगों की योग्यता के अनुसार जो उनकी क्षमता है कि वह कितना सत्य और वास्तविक तथ्य और भगवान के साथ अपना संबंध समझ लेंगे, भगवान उसी के अनुरूप प्रकट होते हैं। Just like I studied Catholicism for 12 years. जैसे कि मान लीजिए मैं कैथोलिसिस 12 वर्षों तक पढ़ा। And they say quite plainly, Jesus actually says to his followers, there's so much more I have to tell you, but your ears cannot bear to hear it. Shri Shri Radha Madan Mohan Ke, Shri Krishna Balaram Ke, Shri Nitya Gauranga Ke, Shri Jagannath Baladev Subhadra Maharani Ke, Shri Nrsimha Prahlad Maharaja Ke, Nitya Gaur Premanandi. जीसस कहते हैं कि अभी कहने को बहुत कुछ शेष है, लेकिन तुम्हारा अगर मैं बताऊंगा तो तुम उसको स्वीकार नहीं कर पाओगे। But Krishna says,
This knowledge, Rajavidya Rajaguya, Pavitamitu Uttamam. This knowledge is the king of all education. It is the most secret of all secrets because it gives pure realization of consciousness. It is a perfection of religion. It is everlasting and is joyfully performed. तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि यह जो ज्ञान है वह सारे विद्याओं का राजा है और यह परम गुह्य है, क्योंकि यह हमें आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान देता है, इसलिए यह नैतिक सिद्धांत भी है. So to attain that information, to attain that perfection of consciousness, one has to approach the bona fide self-realized soul, and he will tell you everything what to do. तो इस प्रकार से अपने चेतना को अपने सिद्ध स्तर पर लाने के लिए एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखा सके. So why are we wearing this kurta, dhoti? Why are we wearing, tilak? Why are we doing that? तो हम ये धोती कुर्ता तिलक ये सब क्यों पहने हैं? It's because Krishna does that in Goloka Vrindavan. ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण यही करते हैं गोलोक वृंदावन में. Krishna doesn't wear these tight pants. Okay, no offense, but he doesn't wear clothes like that. तो अपराध नहीं लीजिए, लेकिन भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में ऐसे पैंट नहीं पहनते हैं. And everyone knows who I'm talking about. Because we all wore those clothes too. Because we were following the meat eaters. We were following the Malachas. We were following the non-devotees. तो पहले हम भी वैसा ही पहनते थे, क्योंकि हम पहले जो अभक्त हैं, मांसाहारी हैं, उनका हम अनुसरण करते थे. So if you want to see what real culture is, what real life is, all you have to do is look at these 5 altars. That's real culture. That's real life. That's what Goloka Vrindavan is. तो यदि आप वास्तव में संस्कृति और वास्तविक जीवन जानना चाहते हैं तो आप ये 5 ऑल्टर को देखिए, वही वास्तविक जीवन है. You won't see tight pants, women exposed. You won't see that on any of these altars. तो आप किसी भी ऑल्टर पे टाइट पैंट या फिर कोई अंग प्रदर्शन नहीं देखेंगे. Or any of these books. Prabhupada printed 60 volumes, wrote 60 volumes of books showing you exactly what happens in the spiritual world. श्रील प्रभुपाद ने 60 खंडों में पुस्तकें अपनी लिखी. Instead, we would rather follow the books of the meat eaters. We're following, just like India was really never conquered culturally in its history. It was never conquered culturally. Understand this word? श्रील प्रभुपाद ने इतनी पुस्तकें लिखी जैसे बताया जाए कि आध्यात्मिक जगत में कैसे जीवन जिया जाता है, और भारत कभी भी सांस्कृतिक रूप से पराजित नहीं हुआ. Alexander the Great tried, he drove out. The Muslims came and they did all kinds of very terrible things. And even though they may have beat the armies, right? The cultured people never gave up their dharma. They never gave up their dharma. तो अलेक्जेंडर आया, चला गया, उसके बाद मुसलमान भी आए, वो शासन किए, बहुत ही खतरनाक शासन किए, लेकिन जो वास्तविक में धर्म को पालन करते थे वे अपना धर्म कभी नहीं छोड़े. Then the British came and they tried to introduce their culture. No true Sanatan Dharma, no true Vaishnava would give up their culture for British culture. तो उसी तरीके से जो ब्रिटिश हैं वो भी आए, लेकिन जो कोई वास्तविक सनातन धर्म का पालन करता है वह अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेगा. But someone did conquer India. Someone did conquer लेकिन फिर भी Indian culture. किसी ने भारतीय संस्कृति को अब जीत लिया है. And that was the United States of America. They conquered you. और वो है अमेरिका. Because you dress just like them. क्योंकि अब आप उनके ही तरह पहनावा लेते हैं. You make these movies. I saw this nonsense movie on the plane on the way here. It was nonsense. It was just like a nonsense American
sexualized movie. And these were all young Indian boys and girls. तो अभी अमेरिका की पूरी संस्कृति का पालन हो रहा है जैसे कि अब जो फिल्में बनती हैं उसमें पूरा So, Krishna says, if you worship demigods, you go to a planet of demigods. You worship ghosts and demons, you go to the planet of ghosts and demons. If you want to worship Americans, you're going to go to where they're going. And believe me, where they're going is not Goloka Vrindavan. तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि यदि आप देवताओं की पूजा करेंगे तो देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, भूत प्रेत राक्षसों की करेंगे तो उनके बीच में, इसी तरह से आप यदि अमेरिकियों का अनुसरण करेंगे तो आप वहाँ पे जन्म लेंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिकी की जो गति है वो कम से कम गोलोक वृंदावन तो नहीं ही है। There's two things happening in India, which are having come to India. Okay, first of all, I have a question. Everyone who was born before 1976, raise your hand. If you were born before 1976. कोई भी 1976 के पहले यदि जन्मा हो तो अपना हाथ उठाइए। Oh, well, I was born before. Yeah, I know you were born. Okay, and some Mataji's. Okay, Mata. All right, so when I first came to India, I just want to tell you my own personal perspective of things. When I first came to India, 90% of the men were kurtas and dhotis. 90%. जब मैं भारत पहली बार आया तो 90% आदमी धोती कुर्ता पहनते थे। And 95% of the women wore saris. और 95% स्त्रियां साड़ी पहनती थी। And if they weren't wearing saris, they were wearing Punjabis. अगर साड़ी नहीं पहनती थी तो सूट पहनती थी। That's a fact. And I came in and I was like, wow, I'm home. और मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे लगा जैसे मैं अपने घर आ गया। Now I come to India and the only one wearing a dhoti and kurta is me. और अब मैं जब भारत आता हूँ तो जो व्यक्ति केवल धोती कुर्ता पहन रहता है वो सिर्फ मैं रहता हूँ। And I'll tell you, I can talk to any honest Indian and I'll say, why have you given up your culture? And they will feel very ashamed. और मैं आपको बताता हूँ अगर मैं किसी सच्चे ईमानदार भारतीय से बात करूँ कि आप अपना धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते तो वो बहुत ही लज्जित महसूस करेंगे। The greatest thing about India is Krishna, is the Vedic culture, are the Vedas. That's the greatest thing about India. तो भारत के बारे में जो सबसे महान चीज है वह है भगवान कृष्ण, यहाँ की वैदिक सभ्यता। Not that you can build big buildings, you can do all that, you can try to imitate the Americans. They're all going to hell. And if you want to join them, get on the train. तो यदि आप अमेरिका का अनुकरण करना चाहते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग बनाकर तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आप भी उनकी तरह नरक जाएंगे। You would think, and it actually was true, it used to be very true, all of your parents, the older generation that has died off, that were older than me, when I came here, they were always proud of Krishna and Arjuna. They were always proud of the Mahabharata. They were always proud of Ramayana. तो यदि आप अपने पहले की पीढ़ियों से बात करेंगे जो कि हो सकता है अभी मर चुके होंगे, लेकिन उनको अपने जो सभ्यता है कृष्ण अर्जुन पे, महाभारत रामायण पे बहुत ही गर्व था। Now I see this generation has just given up its spine, has given up its culture, its dharma. Why have you given up your dharma? लेकिन आज की पीढ़ी को देखो तो इन्होंने अपना धर्म और संस्कृति छोड़ दी है। भला इन्होंने ऐसा क्यों किया है? And here's another statistic too. Because why am I saying all this on Jagannath Mishra's appearance day? तो इसके लिए भी एक आंकड़ा है। भला मैं ये सब जगन्नाथ मिश्र के आविर्भाव तिथि के उत्सव के दिन क्यों कह रहा हूँ? Because Jagannath Mishra was Paka first class father. क्योंकि जो श्री जगन्नाथ मिश्र हैं वह प्रथम श्रेणी के पिता थे। So back in 76 when I first came to India,
I read a statistic that the divorce rate in India was less than 1%. जब मैं 1976 में Less than 1%. आया तब भारत में जो तलाक का जो दर था वह 1% से भी कम था. And recently, I saw a statistic that now 30%. अभी मैंने आंकड़ा देखा वो 30% हो गया है. So this is very, very significant. America, back in 76, was 25% divorce rate. तो 1976 में अमेरिका में 25% तलाक का दर था. Less than what India is now. यहाँ पे अभी भारत में जो मौजूद है उससे भी कम. Now, 65% divorce rate in America. अभी अमेरिका में 65% है तलाक का दर. So, why am I bringing all these things together? Because when Krishna comes, he teaches by his example. He brings the Vedic knowledge. He shows you, this is how you can go back home, back to Godhead. This is how you can know me. You can follow this process or you can follow illusion. The choice is you. You have free will and choice to go back to Godhead or to go to hell. तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भगवान कृष्ण उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आते हैं, हमें यह ज्ञान देने के लिए आते हैं कि हम किस प्रकार से भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं और उस पद्धति को हम अगर उसका अनुसरण करें तो अपने जो अपनी इच्छा है उसके अनुसार या तो हम भगवत धाम जा सकते हैं या फिर नरक जा सकते हैं. And try to understand, Arjuna actually brought this point up in the beginning of Bhagavad Gita when he said, Krishna, draw my chariot between the two armies that I want to fight, and I want to see who I'm going to have to destroy. And then he did. तो अर्जुन भी यह मुद्दा भगवान कृष्ण के साथ भगवत गीता में शुरुआत में लाते हैं कि जब वो भगवान को बोलते हैं कि आप मेरा रथ सेनाओं के मध्य में ले जाकर चलिए, और कृष्ण इसको वहां पे ले जाते हैं. And then Arjun said, I'm not going to fight. And one of the reasons he said, I am not going to fight is because all the women are going to be unprotected. और वो कई कारण बताते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा. उसमें से एक रहता है क्योंकि इससे जो स्त्रियां हैं वो असुरक्षित हो जाएंगी. I'm going to kill all their husbands. क्योंकि इस युद्ध में मैं सारे उनके पतियों को मार दूंगा. And even though their husbands were demons, still there was a family unit. तो यद्यपि उनके जो पति हैं वे असुर थे लेकिन फिर भी एक परिवार हुआ करता था. So now divorce is like killing husbands. You see? Divorce is killing husbands. और भी अब तलाक मतलब कि आप जो पति हैं उनकी हत्या हो रही है. So there was no like even word, I think, in the Vedic scripture as divorce. I don't think there even is a word like that. तो वैदिक सभ्यता में यह तलाक नाम का कोई शब्द ही नहीं है. Now, it isn't that men are given a license that, oh, I can do anything I want, beat my wife, treat her like stool, and it's okay because I'm a man and she shouldn't divorce me. तो इसका क्या अर्थ है कि जो पति है वह अपने पत्नी के साथ कैसा भी एकदम मलवत उसके साथ आचरण करे कि उसकी पत्नी तो कुछ भी कर सकता है. Rather, know for certain if you're abusing women, the next life you will be a woman and you will be abused. तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आप किसी स्त्री का शोषण कर रहे हैं तो अगले जन्म में आपको स्त्री का शरीर मिलेगा और आपका शोषण होगा. That's how karma works. तो इस प्रकार से कर्म का चक्कर चलता है. Practically the most, I think, the most embraced word of all of Vedic culture in the United States is this word karma. तो the most embraced word. तो अमेरिका में जो सबसे ज्यादा स्वीकार किया गया शब्द है वह है कर्म. Even these
cows slaughtering, intoxicating sex mongrels in America understand karma. For every action, there's a reaction. Or at least they say they understand. यहाँ तक कि अमेरिकी जो कि गौ हत्यारे और बहुत ही ज्यादा यौन अपराध करने वाले हैं, वो भी कर्म को समझते हैं. So the family unit is so important for civilization. यह परिवार जो है ये सभ्यता के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है. Now, I was on the Radha Damodar party, and as you know, every member of the Radha Damodar party was brahmachari. तो मैं राधा दामोदर पार्टी में था और जैसा आप जानते हैं उस पार्टी का हर एक भक्त ब्रह्मचारी था. And Srila Prabhupada brought us into his room one day. श्री प्रभुपाद एक दिन सारे भक्तों को अपने कमरे में बुलाए. And he gave us a very heavy Hare Krishna, Prabhus. Always remember Krishna, never forget Krishna. You can tell him that. तो हरे कृष्णा, आप सब लोग ये ध्यान रख सकते हैं कि कभी कृष्ण को भूले नहीं, हमेशा कृष्ण का स्मरण रखिए. Hare Krishna. So, sometimes you tell the truth, it burns your ears. कभी कोई सत्य बहुत कड़वा लगता है. Anyways, Srila Prabhupada, he said to us, if you can, stay brahmachari. श्री प्रभुपाद ने कहा यदि आप ब्रह्मचारी रह सकें, He said, if you just stay brahmachari, 90% chance you go back to Godhead in this life. 90%. यदि आप ब्रह्मचारी रह सके तो आपका 90% अवसर है कि आप भगवत धाम I didn't say it, Mataji. Srila Prabhupada said it. ऐसा मैंने नहीं कहा, श्री प्रभुपाद ने कहा. He said, Grihastha, maybe 50%. और उन्होंने कहा गृहस्थ हो सकता है कि 50%. But you're in the 50%, Prabhuji. लेकिन आप लोग 50% में आते हैं. Later he told us 25%. बाद में उन्होंने बताया 25%. It's difficult, right? But brahmacharis, you have this opportunity. You have this great opportunity. तो ब्रह्मचारियों के पास एक अच्छा अवसर है. I mean, like to look out and I see all the dhotis and kurtas, and I feel like I'm in another yuga. I'm not in Kali Yuga. तो मैं जब आप सबको धोती कुर्ता में देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं किसी दूसरे युग में हूँ, कलयुग में नहीं हूँ. Then I walk outside this wall and I realize I'm in Kali Yuga. लेकिन जैसे मैं मंदिर के बाहर जाता हूँ मुझको लगता है कि मैं कलयुग में ही हूँ. So we presently are not sitting in the Mahatattva. We're not in the Mahatattva. Right here, we are not in the Mahatattva. We are in Goloka Vrindavan. तो अभी हम यहाँ पे जो बैठे हैं हम भौतिक जगत महत्त्व में नहीं है, हम गोलोक वृंदावन में हैं. Prabhupada says, we don't go to New York, we go to the temple. श्री प्रभुपाद बताते हैं कि हम न्यूयॉर्क नहीं जाते, हम मंदिर जाते हैं. And the temple is Goloka Vrindavan. और मंदिर गोलोक वृंदावन है. So, we are seeking those sincere souls that truly want to break the cycle of birth and death. That's what this movement is. You have to sincerely want to get out of sense gratification. You have to sincerely want to not be imprisoned any longer. तो हम ऐसे निष्ठावान आत्माओं की तलाश में हैं जो कि भगवत धाम जाने के लिए तैयार हैं. तो हमें इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए कि हम किसी इंद्रिय तृप्ति में और कर्म के चक्कर में ना पड़े. Yesterday was Gaur Purnima, the appearance, the descent of the most merciful incarnation of Krishna of all, Sri Chaitanya Mahaprabhu. कल श्री गौर पूर्णिमा थी, परम दयालु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतरण दिवस. He has appeared yet again
Every Gaur Purnima, he appears. And we have the opportunity to surrender to his lotus feet. वे फिर से प्रकट हुए हैं, हर एक गौर पूर्णिमा के दिन वह प्रकट होते हैं और हमारे पास यह अवसर है कि हम उनके चरणों की शरण ग्रहण करें. And he has given this process of Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam. Kalao nasteva, 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 katira nata. Chant the holy name, chant the holy name, chant the holy name. In this age of Kali, there is no other way. Nasteva, no other way. Nasteva, no other way for attaining full Krishna consciousness. तो भगवान बताते हैं कि इस युग में कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के लिए हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवल यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई अन्य गति नहीं है, नहीं है, नहीं है. So we have to stay very strong in our association together. And you know, Srila Prabhupada used to use the analogy like a stick, like one little stick you can break very easy. तो हमें अपने जो संघ है उसमें बहुत ही ज़्यादा सख्ती से अच्छे से रहना चाहिए. श्रील प्रभुपाद एक छड़ी के माध्यम से उदाहरण देते हैं कि एक छड़ी आसानी से टूट जाएगी. But if you put 4 or 5 sticks together, or 10, or 20, or 50, or 1,000 sticks together, we become strong like iron. लेकिन मान लीजिए अगर आप 10, 20, 50 हजार छड़ी एक साथ रख दें तो हम एकदम लोहे की भांति मजबूत हो जाते हैं. And this is why Srila Prabhupada and Bhakti Charu Swami are so honored, because they've created a place where all of us can gather and all of us can break the bondage of illusion, break the bondage of attachment to this material world. तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद और श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज का इतना सम्मान होता है कि उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा स्थान बनाया है कि जहाँ पर हम एक साथ इकट्ठा होकर भगवान के से प्रार्थना कर सकते हैं और जो माया है उसके बंधन से मुक्त हो सकते हैं. When you stop to think, Srila Prabhupada was living in Sri Vrindavan Dham at Radha Damodar temple. He was already liberated. He was already Mahabhagavad. He was Nityasiddha. He had no reason to go anywhere but just stay in Vrindavan and go back to Godhead from there. तो जब श्रील प्रभुपाद वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते थे तो उस समय भी वो नित्य सिद्ध महाभागवत वैष्णव थे. उनको बाहर जाके प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं थी. वो वहाँ वृंदावन में रहते तो भी वापस अपना अकेले भगवत धाम जा सकते थे. And same with Bhakti Charu Swami. He didn't have to build this temple. He didn't have to build this complex. He built this out of love for all of you. तो उसी तरीके से श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज भी, उनको यह मंदिर या कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपके प्रति अपने प्रेम के कारण उन्होंने ऐसा बनाया. And all these people that are coming in, they don't know what's happening, but their material lives are going to be destroyed. So keep coming. तो यहाँ पे जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको मालूम नहीं इनके कि उनका भौतिक जीवन जो है वह नष्ट होने वाला है, इसलिए आते रहना चाहिए. That's how it works. So we have two pronged purpose. One, we want to go back to Godhead. There's nothing wrong for wanting to go back to Godhead. तो हमारे दो मुख्य उद्देश्य हैं. एक तो भगवत धाम जाना, but we also have to have Kripa Sindhu. We have to be an ocean of mercy to everyone in this universe. लेकिन हमें कृपा सिंधु दूसरों के प्रति करुणा भी रखनी है. And the result is, if we do follow the instructions of Srila Prabhupada and Guru Maharaj, we accomplish both things.
तो यदि हम श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज के निर्देशों का पालन करें तो इनसे ये दोनों जो कारण हैं वह उपलब्ध हो जाते हैं. All the problems in this world will be resolved by taking up Krishna consciousness. इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं वह कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने से जा सकती हैं. Prabhupada said if 1% of this planet becomes Krishna conscious, it will become a heavenly planet. Said that. 1%. 99% demons, 1% devotees. It will become like a heavenly planet. श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यदि सिर्फ 1% लोग भी भक्त बन जाएं तो यह पृथ्वी स्वर्ग की तरह बन जाएगी. यानी कि 99% असुर भी रहें और 1% भक्त, उससे भी इतना बदलाव होगा. And he said, if 10% becomes Krishna conscious, he went, oh, it will be like Vaikuntha. और यदि 10% लोग भक्त बन जाएं तो यह वैकुंठ बन जाएगा. Hare Krishna. So be in Vaikuntha here and then go to Goloka Vrindavan. What a perfect plan for your life. तो ये जीवन की ये योजना कितनी अच्छी रहेगी कि यहाँ पे भी वैकुंठ और फिर मरने के बाद गोलोक वृंदावन. We just have to break our attachment and our addiction for the Western world, which is out to just degrade every soul there is. तो हमें सिर्फ यही करना है, जो भी पाश्चात्य देश के प्रति हमारा आसक्ति और उसके प्रति जो नशा है उसको कम करना है, जिसका और यह क्योंकि यह पाश्चात्य जगत है वह हमारे पतन का कारण है. And here's one other point that I would like to make. I mentioned how I've seen how India has degraded externally the general culture, but the Krishna culture in India has exploded. तो मैंने यह देखा है कि भारत में किस प्रकार से जो संस्कृति है उसका जो ह्रास हुआ है, बहुत तेजी से उसका पतन हुआ है, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत है वह एकदम विस्फोट की तरीके से बढ़ा है. So all of you are the manifestation of Prabhupada's desire. It is Prabhupada's plan that all of you are here today and that everyone in India, in all the temples, the Iskcon temples, and I think there's at least 70 of them, right? Something like 70 temples in India with hundreds of thousands of devotees. तो आप सब जो यहाँ पे बैठे हैं वह सब श्रील प्रभुपाद की इच्छा की अभिव्यक्ति हैं. यह श्रील प्रभुपाद की योजना है कि आप उनके माध्यम से, उनकी कृपा से यहाँ पे हैं. भारत में जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं, 70 से ज़्यादा मंदिर हैं, उनमें जो तो भी सैकड़ों हजारों भक्त हैं. This is Prabhupada's plan. You have all been tricked by Srila Prabhupada. तो ये आप सब जितने भी भक्त हैं वह श्रील प्रभुपाद की योजना के अनुसार ही हैं. आप सब श्रील प्रभुपाद के द्वारा छले गए हैं. You lucky, fortunate souls. आप लोग बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान जीव हैं. So fortunate. Prabhupada was planning on getting all of you. आप लोग कितने भाग्यशाली हैं. श्रील प्रभुपाद आप सबको लाने, कृष्ण भावनामृत में लाने की योजना बना रहे थे. When he was preaching before he went to America. But there was not a great response in India. Right? There wasn't a great response. So then Prabhupada thought, you know what? I'll go to America and I'll just get Americans to chant Hare Krishna. Like that's an easy thing to do. And he did it. तो श्री प्रभुपाद जब अमेरिका जाने के पहले भारत में प्रचार कर रहे थे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी. फिर श्री प्रभुपाद अमेरिका गए कि वहाँ पे जाकर उनको हरि नाम करवाएंगे. वह आसान नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिखाया. And then
Prabhupada sent those Americans, I'm one of them, all over the world. And now we have, they actually say there is about 10 million members of the Iskcon movement now. तो श्रील प्रभुपाद ने अमेरिकियों को हरि नाम कराया, उनको भक्त बनाया, उनमें से मैं एक हूँ। और हम सब पूरी दुनिया में अलग अलग कोने में गए, प्रचार किए, और ऐसा अभी करीब 1 करोड़ जो सदस्य हैं इस्कॉन के वो अभी हैं। Those are initiated or aspiring for initiation. That's not our life members. That's not our congregation. That's just committed Iskcon. और जो दीक्षित हैं या फिर दीक्षा लेने के दीक्षा प्रार्थी हैं, वो हमारे उनकी बात हो रही है। So Prabhupada made this plan to get me to join the Hare Krishna movement so that I could get you to join the Hare Krishna movement. तो श्री प्रभुपाद ने मेरा चुनाव कृष्ण भावनामृत के लिए इसलिए किया क्योंकि जैसे मैं आप सबको कृष्ण भावनामृत दे सकूं। Now you can also go and save the rest of America. तो अब आप सब भी जाके पूरे अमेरिका में वहां पे उनको बचा सकते हैं। Or save India. You are saving India. If there's any salvation for India, it's this group right here. This is the group that will actually save India. और आप सब भारत को बचा सकते हैं, बल्कि आप सब भारत को बचा ही रहे हैं। यदि भारत को कहीं से मुक्ति मिल सकती है तो वो आप सब भक्त ही हैं जो उनको मुक्त कर सकते हैं। So let's follow in the footsteps of Jagannath Mishra and be perfect Vaishnavas for the pleasure of Sri Chaitanya Mahaprabhu. श्री जगन्नाथ मिश्र के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए एक उत्कृष्ट वैष्णव बनिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। Is there any questions or comments? कोई प्रश्न? Srila Prabhupada ki, Grantara Srimad Bhagavatam ki, Radha Madan Mohan ki, Gaur Premanandi. Ki Jai Prabhupada. Hare Hare.